So Nadia has Navadvipas, the 9 islands. 9 islands constitute to 9 angas of bhakti. हम लोग देखेंगे messages of Godhead में post one. We will read each island and what that is meant for, what that signifies, and messages of love of Godhead. So maybe up ek all of you may please say each island what it signifies, starting from the back. If you can start, please. If you haven't seen that, I've posted it in the Sankirtan group. Yeah. Huh? Yes, Prabhu, what did you say, Prabhu? 9 islands of Navadvip. I posted on Sankirtan group. Is it okay to use this, Prabhu, or iski zarurat? Oh, sorry. Aapko, huh? Can you hear? Is that okay, Prabhu? Yeah. Godruma Kirtana. Godruma Kirtana. Maybe we could. So you chose that one, Prabhu? ठीक है. Okay. Or can we start with Shravanam? Where is Shravanam? Simanta Dvipa Shravanam. Shravanam by Simanta Dvipa Shravanam. Yeah. And then Kirtanam? Godruma Dvipa. Kirtanam Godruma Dvipa. That's where Srila Bhaktivinoda Thakur's kutira is. Swananda Sukada Kunja. Shravanam, Kirtanam, Smaranam? Madhya Dvipa. It's actually in Madhya. Simanta Dvipa, Godruma Dvipa, Madhya. हम लोग ऐसा देख रहे हैं ना, soon after we take this round, we put the phones aside, हम लोग बोलना है क्या क्या, एक एक द्वीप क्या क्या है. So, who is Simanta Dvipa, please? Shravanam. Yeah. Ek baat, some devotee who has volunteered. Who's that? First one? Simanta from Mataji, me. Aap, okay. Simanta, you are from Simanta Dvip, Mataji? Yes, Mataji. And aap, so Shravanam karte हैं, हाँ? ज़्यादा से श्रवणम करते हैं, ठीक है. आप श्री सीमंत द्वीप से आ गए, ठीक है. Thank you, Mataji. On, who is the next one, please? Who is Godruma from Godruma Dvipa, please? Harvend Prabhu, Kirtan kar rahe aake. Okay, Godruma Dvipa, Kirtana. So you must have seen Srila Bhaktivinoda Thakura there, huh? In the Swananda Sukada Kunja, Prabhu. So were you there when he was writing the Sharanagati songs? Yeah. Have you seen the deities of Srila Bhaktivinoda Thakura? Please tell me the deities. Deities, the name of the deities of Srila Bhaktivinoda Thakura. Radha Madhava hai na, Prabhu? Radha Madhava, yes, Prabhu. Yes, Radha Madhava. That's where this Kirtana came from. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana.
यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 प्रभु, राम आप। हरे हरे Shri Radha Madhava. In which Dvipa is that, Harivan Prabhu? In Godruma Dvipa. And we have the darshan of Shri Radha Madhava. So please have darshan of Shri Radha Madhava in Godruma Dvipa. Mataji, Yes. the Gaur Gadadhar is also there, right? Oh, Antardvipa? They are in Antar. Gaur Gadadhara, they are the deities of Srila Bhaktivinoda Thakura. They are there. Wahan hai. But Gaura is born at Yogapith in Antardvipa. Is that the next one? Shravanam, Kirtanam, Smaranam is Madhya Dvipa. So we will come to that, Mataji, soon. No, what I was asking Is that the Bhaktivinoda Thakur has Gaur Gadadhar Yes, and the deities. Radha Madhav both. yeah, Radha Madhava is his personal deities. Huh. Chota Radha Madhava. That His Holiness Haladhar Maharaj is serving now. Yes. They came from Bhaktivinoda Thakura to Srimad Gaur Govinda Maharaja and to His Holiness Haladhar Maharaja. Yes. So they are now residing in Pattamundai. That's about 1 hour from Gadagiri. So they are there, and every month during Kartik, Sri Radha Madhava of Srila Bhaktivinoda Thakura, they go to Sri Vrindavan Dham. Yes. And on the altar of Sri Radha Madhava they are there. Yes, they are the personal deities of Srila Bhaktivinoda Thakura, altar pe. Yes. And Gaura Gadadhara in the house Okay. of Swananda Sukhada Kunj. Yes, there are the deities there, Gaura Gadadhara deities. Yes. And ashram mein hai, yes, the big deities. Thank you. Yes, madam. Jaya, 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 Jaya. And yeah, the next one is, what island is that, please? Who is the devotee besides, yeah? Who is Nitai Gunmani Prabhu? आप मध्य द्वीप से आए? Okay, तो आप स्मरण is your anga of bhakti. मध्य द्वीप स्मरण, गोद्रुम द्वीप कीर्तन, सीमंत द्वीप श्रवण. Then Shravana, Kirtana, Smarana. Where is Vandana? Yeah. Who is the next devotee, please? No, not it. You're deciding who is next. No, the special devotee we are waiting on. Oh, the VIP. Oh, that's why. So that's a special Dvipa. Janu Dvipa. Is it Shivai? है ना? Yeah, VIP. Shiva is from Janu Dvipa. Yes, beta. हम लोग बोलेंगे आपके तरफ से. Yes. बेटा. Oh yes, Janu Dvipa. So कहाँ से आए आप बेटा अपने? Oh, Janu Dvipa. Yes, yes. तो आप बार बार वंदना करते हैं. Okay. So now we know, when we see you beta, Shivai, हम लोग वंदना करें. We will do vandana to you. So Janu Dvipa, vandana.
And who is next one, please? Ritu Deepa Mataji. Ritu Deepa? Archanam. Ritu Deepa, where are you? The black one. Oh, okay. Archana. You are busy doing Archana, Mataji. आप ऋतु द्वीप से आए. ठीक है. Yes, please. ऋतु द्वीपा. जानु द्वीपा वंदना. ऋतु द्वीपा अर्चना. And next one is Kola Deepa. Vandanam Kola Deepa. Archanam. Kola Dvipa. Vandanam Archanam. Pada Sevan. Pada Sevanam. इसीलिए कोला द्वीपा. कोला द्वीपा. ओ वहाँ है कोलावेचा श्रीधर. नहीं. Kolavechha means the banana leaf buyer. Yeah, Sridhara is not that too, not that far. We will know. आप सब द्वीपवासीस है ना? Before our Sankirtana, county Sankirtana ends, we have 3 overnight stays. All द्वीपवासीस, आपके द्वीपा के बारे में कुछ बोलना है आप लोग. Okay, Mataji. ठीक है. And श्री राधा माधव दासा आपको तो शुरू हुआ. Harvendu Prabhu, you have to continue from there for Godruma. So some other day. So you please prepare whatever is there. You please know what your Dvipa is about, and let us know Dvipavasis. Not me. Very nice. Okay. Me. Yeah. So okay. Kola Dvipavasi, Lalita Priya Mataji, ठीक है Mataji? Yes, आपका द्वीपा के बारे में. Kola Dvipa, Pada Sevanam. And then next one. Who is the next one? Sakya. Sakya है ना? That is Rudra Dvipa. Rudra is Sakya, right? We are going by Modat Ruma. Sevanam Sakyam. Modat Ruma, हाँ है ना? आप मोदत ध्रुमा से हैं. You really had to figure out the Dvipa. Thank you for figuring out and letting us know, Mataji. The most puzzled one. Okay. Seva. Maybe we can check that. Huh? Yeah, that's what they might have meant there. Okay. आप द्वीपवासी साहब चेक करके हम लोग कंफर्म करना. Yeah, मोदत ध्रुमा. Is it पाद सेवनम? Pada Sevanam Kola Deepa. वो है ना? दास्यम. ओके से ये दास्यम. ठीक है. दास्यम. एंड यस माताजी आप रुद्र द्वीप से आए वृंदरानी माताजी. तो आप सब लोग वहाँ साक्य रस में है क्या? रुद्र द्वीपा साक्य. दास्यम साक्यम. एंड द लास्ट वन प्रभु श्री चैतन्य प्रभु. आप ड्राइव करना, मैं आपके बारे श्री चैतन्य प्रभु इज फ्रॉम अंतर्द्वीपा. अंतर्द्वीपा, so that is Atma Nivedana. Antardvipa is about Atma Nivedana. So we are actually in Antardvipa, Shri Chaitanya Prabhu. So you are giving us a tour in your Dvipa today. Yeah, this is and Prabhu is like, oh, I didn't know that. So this is Antardvipa. आज का our mercy today is a Nadia में Antardvipa mercy. Gaura Gadadhara. Gadai Gauranga's Sankirtana mercy, especially today, dear devotees, because this, especially this Sankirtan trip, by the messages that we have seen so far, it just got consolidated for all those who are especially in the age of Vanaprastha and who is praying for, let me put it this way, who is praying for these moments. Who is praying for these moments and who is praying that these moments, this mercy continues to flow to give us the shelter as long as we are in this body and as we make this transition to the next. It may sound like, oh, is that so? But please step back and think, dear devotee. Isn't that the reality? Isn't that the reality?
So this is an unprecedented mercy that has come this way. Honestly, we didn't know where we were getting into. When this was just started as some Sankirtan, little Sankirtan in the park, we didn't know where the mercy was taking us to. We thought Sankirtan, Panchatattva were just taking us to the counties, but we didn't realize that they are putting in this merciful incubation chamber for all these hours and just let us out for few minutes to do the Sankirtan outside. We didn't know what mercy incubation chamber has been given to us. So for those who were praying to continue to be in this incubation chamber of this Gaura Premanama Sankirtana, this is a significant Sankirtan Yatra. The other day was the appearance of Sri Gadadhar Pandita. So, with the mercy and the blessings of Sri Gadadhar Pandita, this specifically this Gaura Gadadhara, Gadai Gauranga Sankirtana Yatra is, this is specifically for that, to reinforce, to consolidate, to long and to cherish for this mercy to continue. For all those who are praying for, this is the time throughout the day. And for me, this Sankirtana, this Gaura Premana Nama Sankirtana, this is the shelter I was longing for, and I need it. For me, there is no bhakti without this. This is the very fountainhead. And somehow these weekends, the Saturday and Sunday, how this incubation chamber has been taking us to different places from 8 to 14 hours a day. This mercy is unforgettable. So every weekend, I look forward to this mercy. I personally look forward to this mercy for that very, very 14 to 16 hours a day. I am praying that I get this mercy 16 hours a day, Saturday, Sunday. This is my prayer. And how will that manifest? I just have to wait and see. But this is my heartfelt prayer to Sri Sri Guru and Gauranga to very kindly, so very kindly, please, begging to keep me and to keep whoever is praying for this. Keep us in this shelter, please. Ayinanda tanuja kinkaram patitam mam vishame pat bhavam buddha kripaya tava pada pankaja stita dhuli sadrisham vichintaya. This is Gaura Gadadhara Sankirtana Yatra. The continuation of this would be Gaura Vanaprastha, and every weekend, Saturday and Sunday, is to remind us and is to take us to this place. Ayinanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddha kripaya tava pada pankaja stita dhuli sadrisham vichintaya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, we have to live in Sri Sikshashtakam, not just hear it, not just parrot reciting, hearing, but actually living in Sri Sikshashtakam. And this mercy
The Gaura Prema Nama Sankirtana mercy specifically is meant to soak us in that living in Sri Sikshashtakam. वो हमारे बस की बात नहीं है. It cannot be done by a conditioned being. But when the mercy comes, the causeless mercy comes and decides to soak us in that mercy, only then it can happen. And that's why begging for this mercy every weekend, Saturday, Sunday. That's 16 hours, of course, 4 days a week, pakka. And how that will manifest on Saturday and Sunday, I do not know. On the weekdays, okay, I can just personally वो हो जाएगा. But weekends वो कहाँ कैसे manifest होता है मुझे मालूम नहीं. I just have to wait and see. But पक्का ये तो है कि 3 to 6 hours गौर प्रेम नाम संकीर्तन होगा. वो तो होगा. And more than that, what happens मुझे मालूम नहीं. That's as of now. But my personal prayer and meditation for this Sankirtan Yatra is that 16 hours a day, at least 4 days a week, living in Sri Sikshashtakam. That's the prayer as a beggar. This is the Gadai Gaura Sankirtana Yatra Antardvipaka. तो वो है संकल्पा, वो है the prayer. गादाई गौरचंद्र की जया. तो Antardvipa is a place, Yogapita. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared here, and very close to his place, Yogapita, Sri Gadadhara Pandita was also living there. So we heard about those pastimes, childhood pastimes like that. So all that happened here in Antardvip, in this Antardvip, Yogapita and Sri Gadadhara Pandita's house. They are here in Antardvip. की शायाने की भोजाने की बाजा गरने आहर निशा चिंता कृष्णा बाला हवादाने. की शयने की भोजने की बाजा गरणे. Can I see the आहर निशा चिंता कृष्णा बलह वदनी. यादिया मा प्रति स्नेहा ताहे सब कारा ताबे कृष्ण व्यतिरिक्ता नागाई बेआरा. यदि आमय प्रति स्नेहा ताबे सब करा ताबे कृष्ण व्यतिरिक्त नागाई बेआरा. जया जया हरि नामा. Advaitangan, Sri Advaita Bhavan. Outside the main temple at Srivasangan, you can see 2 small temples about 30 meters away, both within the same compound. So that's not too far. Advaita Bhavan is not too far. Prabhu, kitna dur hai Prabhu? 30 minutes. Oh, 30 minutes, like 30 feet, yeah, just 30 feet, you see, yeah. From Gadadharangan to Advaita Bhavan is like 30 feet ke jaise, aisa. A small temple marks the place where Sri Advaita lived and houses the deity of Advaita Acharya sitting at feet of Lord Chaitanya. Have anybody? Aap log, have you had a darshan of this Advaita Bhavan mein? Yeah. I mean,
यहाँ पे यस पक्का नहीं वी हैवंट माताजी वी विल हैव या देख लेना संभाल के दर्श दर्शन वेयर गोना हैव अद्वैताचार्य सिटिंग एट द फीट ऑफ श्रीमान महाप्रभु या ओके मैं पहले ही बोल रही हूँ वहाँ जाने के बाद यू शुडंट से माताजी नो वी डिडंट फाइंड पहले ठीक है माताजी जब कीर्तन करते हैं ना यहाँ वहाँ देखना नहीं हम लोग we don't know when they want to come give their darshan so got to be very much present because this is it. so at this place he offered prayers imploring the Lord to descend. He would sit on the bank of the Ganga, worship Shalagramashilas and beg Krishna to appear. By his prayers, Sri Chaitanya Mahaprabhu came and inaugurated the Sankirtan mission. Advaitacharya lived in Shantipur but kept this bhavan for his Mayapur visits. आप किस द्वीप से आए हैं माता जी? वृंदारणी माता? ओके, रुद्रद्वीप वासी आपका प्रश्न मिल गया, प्रश्न का समाधान मिल गया. यस रुद्रद्वीपवासी माता जी क्या है माता जी वी डिडंट नो दैट यू आर रुद्रद्वीपवासी माता जी वेरी एस्टीम्ड वैष्णवास एक द्वीप से आप नो वंडर एवरीबडी ऐसा चंदन डाल के गार्लैंड से के ऐसा वेलकम करके कीर्तन करके फुट डस्ट लेके हरि बोल मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी पुण्य मेरे हाइट्स ऑफ माय फॉर्च्यून ये अंतर्द्वीपवासी यहाँ टेकिंग अस टू टिप ऑफ द टोनेल्स ऑफ भगवान. आप लोग आप द्वीपवासी कौन सा द्वीप है प्लीज? कोला द्वीपवासी यू एक्चुअली डू द सेवा पाद सेवनम ऑफ भगवान. कोला द्वीपवासी हरि बोल समाश्रितायेन पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारिः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं यद्विपदं न तेषाम्. मुझे तो लोटस फीट ही दिखा रहे माता जी. आप द होल द्वीपवासीस तो वो कोला द्वीप पाद सेवनम रुद्र द्वीप साख्या मोद्रुम द्वीप दास्यम अंतर्द्वीप आत्मनिवेदनम. आप बोलना माता जी. ऋतु द्वीप से है आप. ओह माता जी आप ऐसे करना चंदन आपको ऐसे चंदन garland. Do you like the fragrance? Like offered है dust. Chai. And so आप दोनों मिलके आए साथ या पास है ना? कोला द्वीप है आप ऋतु द्वीप से. ऋतु द्वीप कौन सा अंग भक्ति? अर्चनम. तो आप तो होल दिव्य मंगल विग्रह भगवान को अर्चन करते हैं. अर्चना पद्धति बहुत मालूम है आपको? Oh, wonderful. So all of you are very much immersed in the archana of Sri Murti of Bhagavan. Are they Radha Govinda? Radha Govinda, Radha Madhava? Radha Madhava, okay.
Do they visit from Godruma to your place? Yeah, Radha Madhava. Yes. Oh, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर सिखाया आपको कैसे अर्चना करना है राधा माधव को? I wish I can. नहीं सिखाया या इसीलिए आप कर रहे हैं या आप द्वीपवासी ऋतु द्वीपवासी से ना. सो भक्तिविनोद ठाकुर राधा माधवा को कैसे अर्चन करना है सिखाया. एंड आप लोग ऋतु द्वीपवासी ऑल ऑफ यू अर्चना. I think I would need at least one lifetime with all of you to learn कि कैसे करना है अर्चना सेवक का कैसे करना है पाद सेवनम कैसे करना है. One lifetime and more lifetimes is also fine. After all, these are all angas of bhakti. So अर्चना ऋतु द्वीपवासी चंदन please. You like the fragrance of chandan? ये भी offered है. Yes. Offered? Very much. ठीक है. चंदन यहाँ इतना धूप नहीं थोड़ा सा बट यहाँ लगाते हैं. ठीक. एक गार्लैंड है. You like it? Yeah. Yes. इसमें थोड़ा सा तुलसी. You smell the some tulsi too. That is also. Yeah. क्या है मॉर्निंग प्रेयर का है ना. तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दं किञ्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः. Good. जय ऋतु द्वीपवासी की जय. ज्योत्सना माता जी की जय. ऐसे क्यों हाइड कर? हाँ यस. आप कौन सा द्वीप है माता जी? सीमंत द्वीप से. सब मिलके आए क्या ऑल तीन ऑफ यू? ऋतु द्वीप से और कोला द्वीप से. सीमंत द्वीप. कौन सा अंग ऑफ भक्ति है आपको? श्रवणम. भगवान के बारे में इतना श्रवण होता है आपको. आप लोग हमको सुनाई दें. यू प्लीज स्पीक. क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनाई देना. सुनाइए. यस. Shravanam. So you know everything about Bhagavan. Nama Rupa Leela of Bhagavan. Shravanam. आप सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे क्या? हाँ? सुखदेव गोस्वामी. Yeah. Because Lord Shiva said, Srimad Bhagavatam. I may know Srimad Bhagavatam. Sukadev may or may not know. No, Vyasa may or may not know. Sukadev knows Srimad Bhagavatam. So Badarayini, the son of Vyasadeva. Badarayini is to say that he is the fruit of the tapasya of Vyasadeva. He is not an ordinary person. Sukadev Goswami से आप श्रवण करते. तो कभी कभी please give us. We want to hear from you. जो कुछ टॉपिक अब क्या है कौन सा द्वीप? सीमंत द्वीप है ना. या सो वी वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट द सीमंत द्वीप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट. इज दैट ओके माता जी? सीमंत द्वीप. ओ माय गुडनेस, ये वैन तो ऑर्डिनरी नहीं लग रहे मुझे अब. चंदन प्लीज. चंदन. Oh yes please. ये गार्लैंड. प्लेट है ना. आरती भी दूंगी ना. प्लेट आरती and then welcome and then food test. जय सीमंत द्वीपवासी की जय. दीपशिका माता जी की जय. बेटा इज इट स्टिल ओके? बेटा आप कहाँ से? जानो द्वीप.
वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज फ्रॉम जानूद्वीप. कौन सा अंग ऑफ भक्ति आपको पसंद है बेटा? व्हाट डू यू डू अ लॉट? Oh wow, he's like, of course I do Vandanam. Vandanam all the time, all the time, all the time. Vandanam. सिखाना बेटा हम लोग को प्लीज कैसे वंदनम करते हैं. सिखाते हैं जी. बाद में you please let us know when you are in a mood to teach us Vandanam before the end of the day. ठीक है? हाँ? सिखाते? Yes? Oh yes, मत. Yeah, plate has come. And आपको भी चंदन. हाँ बेटा. And then after that Mataji, garland. Okay, garland. आपको कौन सा फ्लावर्स चाहिए बेटा? ब्लू, पिंक, येलो, व्हाइट? हाँ? You don't know? Okay, all the mix of colors. हाँ Mataji? Yes, mix of colors है बेटा. आप चूज करो. अच्छा है फ्रेग्रेंस? अच्छा है? वो भी हो गया. Yes बेटा, thank you. And yes. वैष्णवेर पादधूलि ताहि मोर स्नान केळि तर्पण मोर वैष्णवेर. द्वीप जानूद्वीप है ना? जानूद्वीप वासीस की जय. शिवाय है ना? शिवाय सेज की जय. हाँ बेटा. I don't know what would happen to my back and neck, but दया करके थोड़ा सा प्रभु. ये या आप बोलना प्रभु. निताई गुणमणि प्रभु कहाँ, कौन से द्वीप से प्रभु आप? मध्य द्वीप. आप इतना रेडिएंट ऐसा दिखा रहे प्रभु. क्या है मध्य द्वीप में? क्या अंग ऑफ भक्ति करते? इसीलिए यू अपीयर टू बी इन डीप मेडिटेशन प्रभु. ऐसे ही होते क्या ऑल ऑफ योर द्वीपवासीज? All meditative, हाँ? कुछ बोलने के नहीं, कुछ नहीं, जस्ट स्मरण. का स्मरण, स्मरणावस्था में. वेरी गुड. स्मरण. तो श्रावण से स्मरण तक. So you're all in स्मरण. अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः. So all of you Dweepvasis are always ready, Prabhu. It doesn't matter to you whether residing in this mortal frame or residing in the spiritual realm. Doesn't matter to you because you're always in Smaran. So whenever the transition happens, whenever Bhagwan wants to make the transition from mortal frame to the eternal realm, all you Dweepvasis are ready. So you should teach us, Prabhu, कि कैसे भगवान की स्मरण होता है. In this day and age कैसे होता है प्रभु भगवान का स्मरण? Is it नाम स्मरण? नाम से होता है स्मरण, है ना? कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार. नाम हैते हया जगत निस्तारा. So it is through nama that smarana avastha is obtained in Kali Yuga. Through nama. Through nama smarana is obtained. Through smarana dasya, sakyam, vandanam, all the other angas happen through Smarana. Starts with Nama, gets to Smarana, and with Smarana all these things happen. Shravanam, Nama means Shravanam, right? So, Shravan, Naam ko Shravan karke Smaran tak chalta hai. Smaran, on that platform, all these angas of bhakti are performed. Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam, everything. So, Pada Sevanam is when the Rupa of Bhagavan is revealed. In the Smarana Dasa, the Rupa of Bhagavan is revealed. That's where the Pada Sevanam happens. So, Smarana. Yes. Varanam, yeah. Smarana, Varanam. Yes, I will. Yeah. That Shravana, Varana, Smarana, Bhava Apanna, Prema Sampatti. 5.
तो प्रभु आपका द्वीप ये कौन सा द्वीप है? मध्य द्वीप, मध्य द्वीप, मध्य द्वीप वासी की जय। ऑल द स्मरण भक्तास की जय। निताय गुणमणि प्रभु की जय। प्रभु ओके, यहाँ अंतर्द्वीप वासी है श्री चैतन्य प्रभु, आपको चंदन लगा रहे हैं प्रभु। मैं तुझे प्लेट वहाँ दे लेना। ओके, ही सेवा में बिजी है वहाँ। हरविंद प्रभु आप कौन से गोत्र में वासी? प्लेट वहाँ है। हरविंद प्रभु चंदन डालना प्लीज, प्लीज ऑनर निताय गुण प्रभु विद चंदन, या एंड गार्लैंड प्लीज पास ऑन द गार्लैंड, या कलरफुल वन। वो तुलसी ऑफर, तुलसी भी है प्रभु। यस, या डाल दिए प्रभु। यस, थोड़ा सा फूड डस्ट प्रभु, या प्लीज ट्रांसफर हियर टू प्रभु। यस 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 यस, ठीक है ठीक है। मध्य द्वीपवासी की जय। निताय गुणमणि प्रभु की जय। अब आ रहे गोद्रुमवासी। गोद्रुमवासी, आपने भक्ति विनोद ठाकुर का दर्शन लिया? गोद्रुमवासी हरविंद प्रभु। प्रभु आई कैन नॉट सी यू, कुछ तो करना है प्रभु। हाँ यस प्रभु, ये निकाल दे वो सब कुछ। दिस इज बेटर। तो प्रभु कौन सा अंग भक्ति प्रभु आपका द्वीप में? कीर्तन। वाह, कौन से कीर्तन प्रभु? कैसे? एक मिनट कीर्तन आप कर सकते? सो वी कैन रिपीट। ओ दिस इज इट कीर्तन कर सकते हैं क्या? So we can repeat, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय 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 जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। गोद्रुमवासी की जय। श्री हरवेण प्रभु की जय। प्रभु निताय गुण प्रभु। प्लेट यू हैव माता जी? ऋतु द्वीपवासी आप प्लेट या प्रभु चंदन या चंदन लगाना धीरे से प्रभु। इट्स नॉट सो हॉट टुडे बट स्टिल भी लगा सकते हैं। या इज इट कूलिंग सूदिंग इफेक्ट है हरविंद प्रभु? हाँ यस चंदन। आप प्रभु आरती भी लगा सकते हैं प्रभु, वो प्लेट में है। यस, दिस इज आवर रिवाज है। दिस इज हाउ वी ग्रीट द वैष्णवस हरविंद प्रभु। गोद्रुमवासी सो है प्रभु। आरती हो गया? अब गार्लैंड है। अच्छा फर्स्ट गार्लैंड है बट नो प्रॉब्लम। गार्लैंड प्रभु। हाँ हाँ डाल दिया प्रभु नित्य गुण। ठीक है, यस गुड। द डस्ट, यस प्लीज इफ यू कैन पास ऑन द डस्ट। या थोड़ा सा आपसे हाथ तो भी देना डस्ट। यस दे दो, आप दे दो, वहां से आए ना। यस प्रभु आपको भी। यस जय। गोद्रुमवासी की जय। हरवेण प्रभु की जय।
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की की जय श्री श्री राधा माधव की जय जय राधा माताजी, आपका पाद हा 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 Yes, प्रभु yes, yes. मेरे कोई द्वीप नहीं है प्रभु can we मेरी पोजीशन तो फिक्स्ड है and we can do the shloka together. Yeah, you know the shloka प्रभु? कौन सा कैसे स्टार्ट होते हैं वो? स्वउत्तम श्लोका महान मुखाच्युत भवत्पदाम्बोजा सुधाकणानिला स्मृतिः पुनः विस्मृततत्त्ववत्मणम् कुयोगिनां न वितरति अलं वरैः. और एक रहुगणायेत तपसा नयेति न चेत्यया निर्विपणात् गृहात् वा न छान्दसायैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. Yeah, but please send the Oh, यहाँ. That is what you've been getting every day, Prabhu. that's what we are getting. Send करके ये क्या है? It is just coming and every day. Now I cannot say. Yeah, Prabhu, yes. नहीं करने, Prabhu, yes. तो प्रभु